Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today's topic is magnetic field on axis of circular current loop. This is one of the application of Biot-Savart law. How we can find the magnetic field at a far point P from a circular loop that is carrying current. You see, this is a circular loop, and the radius of this loop is say r, and we are going to find what is the magnetic field at a point P due to this circular loop carrying current. So we have to find the magnetic induction at point P on the axis of the wire. We have to find the magnetic induction at point P on the axis of wire, which is at a distance x from the center of the wire, this center of the wire, and the point P is lying at a distance x from the center of the wire. Now we consider a small current element. We take a small current element dl in this case, and we are going to find what is the value of dB at point P due to this small current element. And again we take the same small current element here opposite to this. इसके बिल्कुल उल्टा जो है एक दूसरा हम करंट एलिमेंट देखते हैं. Then you see that the component of dB in this case is, this is a dB cos theta and this one is dB sin theta, while the magnetic induction at point P due to this current element is, again you see, this is dB cos theta and this one is dB sin theta. Yani here dB has two components, one is horizontal components and the second one is vertical components. So according to Biot-Savart law, the magnetic induction at point P is already we studied in the previous lecture. The dB is equal to mu naught I divided by 4 pi dl cross r unit vector divided by r square, means that the Biot-Savart law in this case, you see that the magnetic induction is directly proportional to the current element IDL, also depend upon the sine of theta, and also inversely proportional to the square of the distance. That is dB is equal to mu naught IDL cross r unit vector divided by 4 pi into r square. Yeah, you can write in this way, mu naught IDL divided by 4 pi r square. Now comes toward the figure. From the figure you see that dB has two components. One is horizontal component and the second one is vertical component. From the figure you will find that the horizontal component and vertical component, if you see that the component dB cos theta are pointing opposite in direction having the same magnitude, so they are cancelling the effect of each other. For example, if you take pair of current element along the loop of wire in opposite direction, and we want to find the value of dB at point P, then you will see that the component dB cos theta will be pointing opposite to each other, so the sum of its dB cos theta value that goes to 0. While the component you see, the dB sin theta, this is dB sin theta and this is dB sin theta due to this current element and due to this current element, they are supporting each other. So it means that figure dB has horizontal and vertical components, and the component dB cos theta are pointing in opposite direction. Hence the sum of dB cos theta cancelling the effect of dB. How you see that it is cancelling the effect of each other? You see, this is dB cos theta pointing up and this is dB cos theta pointing down, having the same magnitude, oppositely directed, so they will cancel the effect of each other. While here you see this is dB sin theta and here you see this is dB sin theta, so both will support each other. So it means that only the dB sin theta component will contribute toward the magnetic induction dB. So we will take the sum of dB sin theta rather than dB cos theta. That is why you see here the effect of dB, while the component dB sin theta support each other and contribute to the total magnetic induction at point P. Hence the total magnetic field
of the whole of the current loop is given by b is equal to integral db sine theta. Integral is taken in this case so that to know about the whole value of b at point P due to db sine theta. B is equal to integral db sine theta. But according to Faraday-Biout law, dB is equal to mu naught I divided by 4 pi dl divided by r square into sine theta. This is the Faraday law equation. But from the figure you see here again that sine theta is equal to r over r, perpendicular by base. So the value r by r is basically because of sine theta. And you get the value integral mu naught I r divided by 4 pi dl divided by r cube. But from the figure again you see that r square, this is equal to x square plus r square. R square is equal to Pythagoras theorem. X square plus r square, r will be equal to x square plus r square 1 by 2. Putting the value of r in this equation, you will find that the value of dB in this case will be equal to taking mu naught I r divided by 4 pi out, because the current is cast in mu naught permeability of free space and the radius of the circular wire is again constant. Taking it out, you will get only dl. But dl, you see that the circumference of this circular loop is 2 pi r. So in this case we have 0 to 2 pi r dl, r which is equal to mu naught I r divided by 4 pi r cube, and dl is basically 2 pi r. So you will get the value mu naught I r square divided by 2 into r square plus x square 3 by 2. Here the value of r is r cube. R is r square plus x square 1 by 2. R cube becomes r square plus x square 3 by 2. So this is the value of B, which is developed at point P due to loop of wire carrying current I. Now what will happen if you take x is equal to 0, where you see x is the distance between a point P and at the center of the loop. It means that we are going to find what will be the value of B at the center of the loop. What will be the value of B at the center of the loop? So putting here for x is equal to 0 means you are finding what is the value of B at the center of the loop. So this will be equal to mu naught, B is equal to mu naught I r square divided by 2 into r square. यहाँ 0 put करें, 0 into 3 by 2, या you will get mu naught I divided by 2r. तो इससे मुराद क्या हुआ? इससे मुराद ये हुआ कि if you are going to find what is the value of B at point P, then the value of B at point P will be, due to this loop of wire, will be mu naught I r square divided by 2 into r square plus x square 3 by 2. If you want to find out the value of B at the center of the loop, what is the value of B at the center of the loop? Then again you will take the value of x is equal to 0, because x is a distance between center of the loop and the point P. So here you see putting value of x is equal to 0 in the above equation. In the above equation you will find that B is equal to mu naught I r square into 2 into r square plus 0 into 3 by 2. और तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? mu naught I divided by 2r. और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी mu naught I डिवाइडेड बाई 2r. एक इक्वेशन तो ये हुआ कि एक तो हमने ये मालूम किया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ द लूप, और अगेन दूसरा इक्वेशन ये हुआ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी एट a distance x from the center of the loop. Now we are going to find, we have taken the loop, but here we are going to find if instead of a loop we take an arc length. If we take an arc, for example, if we take such arc say, then what is the value of B at due to the arc? अब देखें, इससे पहले हमने पूरा लूप लिया था, अब हमने एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, अर्क लेना है, फिर ये देखना है कि वो हमें कितना फील्ड देगा. तो ये आप जो देख रहे हैं
फॉर वन आर्क ऑफ सर्कल मीन्स आप पूरा सर्कल नहीं ले रहे, बल्कि आप क्या ले रहे हैं, एक आर्क लेंथ ले रहे हैं जो कि सेंटर के साथ कोई एंगल बना रहा है। तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास वही इंटीग्रल आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर, जिस तरह के यहाँ, लेकिन ये इंटीग्रल ऑफ ds आएगा। 2 पाई r आपने नहीं लेना है, यू हैवंट to take the 2 pi r because 2 pi r is basically the circumference of loop. But here we are going to take only arc length. So arc length is equal to r theta. As you have already studied the relationship between the displacement and angular displacement, s is equal to r theta. Similarly, v is equal to r omega, a is equal to r alpha, and so on. So here, what is the value of s in this case? That is equal to r theta. That is equal to r theta. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू r थीटा। तो r कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r इंटू थीटा, 4 पाई r इंटू थीटा। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन है ड्यू टू द वन आर्क ऑफ ए सर्कल, वन आर्क ऑफ ए सर्कल। और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था ड्यू टू द होल सर्कल, ड्यू टू द होल सर्कल। और ये आपके पास आर्क लेंथ का है, और ये आपके पास सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसी का है। और अब हमने देखना है कि देखें, एक तो हमने वैल्यू बी एट ए डिस्टेंस 6 फ्रॉम सेंटर ऑफ द लूप कैलकुलेट किया। सेकंड केस में हमने कैलकुलेट किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एट ए सेंटर ऑफ द लूप व्हेन x is 0, and in the third case, rather than taking the whole loop, we have taken only the one arc length of the loop, one arc length of the loop which is making angle theta with the center. And in the fourth case you see that if x is very greater than r, for example, you have taken the point very far away from the loop carrying current I, radius r, then in this case you see that r is negligible compared to r. r is negligible compared to r. तो आपके पास ये वैल्यू r की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपके पास ये b होगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2x क्यूब, 2x क्यूब। तो अब देखें, ये b जो है, b ये 1/r क्यूब x क्यूब की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो in case of electric field, you have already studied that electric field due to point charge is inversely proportional to r square, or electric field due to dipole is inversely proportional to r cube. Electric field due to quadrupole is inversely proportional to r4, and to so on, octupole and so on. So it means that here you see b is inversely proportional to x cube. b is inversely proportional to x cube. तो इससे मुराद ये है कि it is convenient to consider a loop of wire to be a magnetic dipole. Loop of wire to be magnetic dipole, it will be convenient. Just like in case of electric field is inversely proportional to r square, is inversely proportional to r cube, is inversely proportional to r4. In case of point charge is inversely proportional to r square. In case of dipole, electric field is inversely proportional to r cube. Here you see that b is inversely proportional to x cube, so it means that the loop of wire to be a magnetic dipole in this case. जिस तरीके से वहाँ इलेक्ट्रिक को डायपोल मोमेंट आ रहा था, तो इस तरीके से यहाँ भी आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आ जाएगा। सो इससे मुराद इसकी समरी ये हुई कि हमने एक लूप ऑफ वायर लिया था, और उस लूप ऑफ वायर जो है जिसका रेडियस आर है, और वो करंट कैरी कर रहा था, करंट कैरी कर रहा था। तो हम ये मालूम करना चाह रहे थे कि ये इस एक्सिस पे इसकी वैल्यू अभी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर एक करंट जो है, अगर एक वायर जो है वो करंट कैरी करे, स्टेडी करंट कैरी करे, तो राउंड द वायर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम मालूम करने चाह रहे थे। तो फिर हमने देखा डीबी हमने लिया, करंट एलिमेंट ले ली, पेयर उनकी ले ली,
तो डी बी कास थीटा आपस में उन्होंने कैंसिल किया और डी बी साइन थीटा ने आपस में आप लोगों ने देखा कि उसने क्या सपोर्ट किया। तो इसलिए इसकी डी बी साइन थीटा की हमने इंटीग्रल ले ली। अगर इधर देख रहे हैं तो हमने डी बी साइन थीटा की इंटीग्रल ली है, यानी उसका सम लिया पूरा कि पेयर ले लें, करंट एलिमेंट का पेयर ले लें, तो आप इसको कैलकुलेट करें। और उसके बाद फिर बाइट सर्टला का चूँकि एप्लीकेशन है तो डी बी की कीमत यहाँ डालिए और साइन थीटा फिगर से आर और आर है, तो गोया हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है एट ए डिस्टेंस 6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप हमारे पास ये आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स क्यू स्क्वायर 3/2। फिर हमने वैल्यू ऑफ बी जो है, यानी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ द लूप बाई टेकिंग एक्स इज इक्वल टू 0, तो फिर आपने देखा कि म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। फिर हमने देखा कि अर्क लेंथ, एक पूरा अर्क रादर देन होल लूप, अर्क लेंथ पे कितना वैल्यू ऑफ बी हमारे पास होगा, तो वो कैलकुलेट कर म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई 4πr। फोर्थ केस में हमने देखा कि इफ़ यू टेक द पॉइंट P वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम R, देन रेडियस इन दिस केस इज नेग्लिजिबल, तो ये R को हमने नेग्लेक्ट किया इस केस में ये, और हमारे पास देखा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x³। चूँकि बी यहाँ x³ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इससे मुराद है कि यहाँ हम इट इज़ कन्वीनियंट टू कंसिडर अ लूप ऑफ वायर टू बी अ मैग्नेटिक डायपोल। थैंक यू।